Hello everyone, this is Sumit. Welcome to PETROGATE PYQ series. Or in this small session, we will discuss the questions that has been asked in GATE 2021 and from the offshore technology. Okay, so that we will discuss here. So we will discuss all the questions which has been asked in GATE 2021 from the offshore, and I think 4 to 5 questions is there that has been asked from the offshore. And according to me कि वो काफी था, वो बहुत ज्यादा था जो पूछ लिया गया था ऑफशोर से. इतना बहुत ज्यादा उम्मीद ऑफशोर से नहीं होता है. ठीक है, जनरली वी डोंट थिंक कि 4 to 5 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द ऑफशोर, बट इन गेट 2021 दैट हैज बीन आस्क्ड. ओके, नो प्रॉब्लम. बट ऑफशोर इज वेरी सिंपल एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है. तो वी डोंट यूज मच मोर माइंड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. वी विल रिमेंबर सम काइंड ऑफ थिंग्स ओनली. वी हैव टू लर्न. ओके, नो प्रॉब्लम. तो हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि उसका पर्टिकुलर डेप्थ क्या था, उसका पर्टिकुलर डेप्थ क्या था, उसका पर्टिकुलर डेप्थ क्या था, और वो थोड़ा सा चीजें हैं जो याद रखने वाली होती हैं ऑफशोर में. और वो रिग कैसी होती है दिखने में, उससे रिलेटेड मुझे कुछ चीजें पता चल जाती हैं. ओके, और स्पार कैसा होता है दिखने में, टीएलपी कैसा होता है, और जनरली सम एक स्पेशल काइंड ऑफ चीजें होती हैं हर एक रिग में, हर एक प्लेटफॉर्म में, वो जस्ट मुझे याद रखनी होती है. तो ओवरऑल इफ आई एम टेलिंग यू कि दिस सब्जेक्ट इज रिमेंबर काइंड ऑफ सब्जेक्ट. ओके, यू हैव टू लर्न. आप लोगों को चीजें थोड़ी याद रखनी पड़ती है. ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये एक बोले तो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है कि इफ यू नो दिस पर्टिकुलर डेटा, इफ यू आपको ये डेटा याद है तो डेफिनेटली ऑफशोर के क्वेश्चन आप जनरली कर ही दोगे. ठीक है, इन एग्जामिनेशन, नो प्रॉब्लम. तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एक छोटा सा सब्जेक्ट है. हालांकि अगर मैं बोलूं कि ऑफशोर एक बड़ा सब्जेक्ट बन सकता है अगर हम इसको बहुत ज्यादा वेटेज दे दे तो, लेकिन गेट के पॉइंट ऑफ से इसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अच्छे सब्जेक्ट अवेलेबल है. ठीक है, बिकॉज अगर मैं बात करूं इसके डिजाइनिंग की, हर एक वेसल्स के डिजाइनिंग की, तो वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें मिल जाएंगी. इनफैक्ट मैं अगर आपको ऑफशोर की किताबें दिखा भी दूंगा ना तो वहां पे लगेगा कि सर ये क्या है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हमें ही पढ़ना है क्या. लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं, हम लोगों को ये जस्ट ऊपरी लेयर से पढ़ना पड़ता है. ठीक है, चलिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस. ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी a MOPU in context of offshore drilling and production system stands for. ओके, तो अगर मैं बात करूं कि सर ऑफशोर में MOPU का मतलब जनरली होता क्या है, दैट ही इज आस्किंग, एंड ऑप्शन इज ऑल्सो गिवन. 1 2 3 4 ऑप्शन इज गिवन. ओके, नो प्रॉब्लम. सर ये मुझे बता दीजिए कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOPU in terms of offshore and drilling production. Okay, drilling and production. Okay, and in offshore, no problem. So before continuing this question, I want to tell you, I want to show you something. You can see this particular diagram, or you can say the classification. Generally, if I'm classify the vessels, or you can say the rig that we are using in offshore, that is the major or general classification. You must remember this particular classification. Okay, now the mobile unit, if I'm talking about the units, can be divided into the two parts. That will be your two parts you are going to divide. The first part is your rigs, that is bottom supported. Okay, bottom supported for drilling. Listen me carefully. Bottom supported for drilling matlab means you will have some kind of vessels like this one or like this one which is used for drilling, and these vessels are, or these rigs are bottom supported. Means these, suppose this is your vessels and this is your seabed and this is your water layer. So these vessels will be your bottom supported, means legs will be there and these legs settle down at the bottom of the seabed. Okay, no problem. And the one example of your submersible, okay, and the second example of jackup. Okay, both vessels you have seen. Jackup rig also, in jackup rig you will have the legs and that legs will be settled down at the bottom. No problem, means bottom supported. Okay, so these are not floating, these are the bottom supported. Okay, now, and these vessels are used, or rigs are used, is called used for drilling. So that's why I can tell you this can be your rig or this can also be your rig. Why? Because these are the used for drilling only.
Okay, submersible, or you can say the next point is your jackup. No problem. Okay, next point is that कि sir, is there any vessels that is used for drilling and that is your for that is used for that is your in floating motion? Okay, floating mode. Yes. So you can say the next classification. Okay, next classification is that कि floating unit, and some are used for drilling and some are used for production. Okay, now some used for drilling and some platform used for production. So which is used for drilling, so that I will writing here, and which is used for flow production, that I am writing here. Okay, now floating unit can be categorized into the two part, which can be used for drill, which can be used for production. Okay, no problem. For drilling means the semi-submersible and drill ship, no problem, and both are floating. These are also floating. Okay, if I'm talking about the units which are floating and that is used for production only, so the example will be your floating production system. The full form with in short you can say the FPS, and as you can say FPSO, you can say FSO. Okay, no problem. And some FSO also can be classified semi-submersible, spar, and conventional TLP and mini TLP. Okay, a lot of these classification is very important, and number of questions can be framed in this particular table only, or in this particular classification only. So that means you have to remember this particular chart, you have to remember this particular table. That's why I am telling you offshore ये याद रखने वाला सब्जेक्ट है. ठीक है, चलिए यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई है. तो क्या मैं कैन आई टेल यू कि MODU is the full form is your mobile offshore drilling unit. Okay, no problem. Next means you can say you can say also this classification your mobile offshore production unit. No problem. So I can say this particular thing also. No problem. If I'm telling you FSO, floating production system, no problem. FPSO, floating production storage and offloading, floating production storage and offloading. Okay, no problem. FSO, floating storage and offloading. Okay, no problem. So these are the full form you have to remember, because आज ये क्वेश्चन आया है, कल इन्हीं में से कोई और क्वेश्चन बन सकता है. Okay, now some more classification, some more full form I will tell you here. MOPSU that generally can ask, because मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आज आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो इस क्वेश्चन के आने से आप क्या सीख रहे हो कि यार मेरे लिए क्या आगे से इस तरीके का क्वेश्चन और बन सकता है क्या? यस बन सकता है. तो वो क्या हो सकता है? वो इन्हीं में से चीजें बन सकती है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पिछले चीजों को ठोकर खा के ही तो सीखना होता है. तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें बन सकती है, दैट आई एम टेलिंग यू. और इन दिस पर्टिकुलर सेशन वट एवर वी आर टेकिंग PYQ सीरीज फॉर यू, दैट द मेन मोटिव इज दैट कि हम इन प्रीवियस क्वेश्चन ईयर से सीख ले कि आगे क्या बन सकता है. ठीक है, चलिए तो यहां पे बात करूं कि MOPSU, मोबिल ऑफशोर प्रोडक्शन स्टोरेज यूनिट. नेक्स्ट योर MODU, मोबिल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट. ओके, तो पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, यू हैव टू नोट इट डाउन, एंड वेरी सिंपल चीजें हैं यहाँ पे. मीन एम देर, जहां भी एम होगा इसका मतलब मोबिल होगा, जहां ओ होगा इसका मतलब या तो ऑफशोर होगा या ऑफलोडिंग होगा, जहां पी होगा उसका मतलब डेफिनेटली प्रोडक्शन मतलब होगा. ठीक है, डी होगा तो ड्रिलिंग मतलब होगा, और एस या तो आपका सिस्टम हो सकता है या स्टोरेज हो सकता है. तो जनरली आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी. तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट ही इज सेइंग कि MOPU का मतलब बता दीजिए सर. ओके, MOPU व्हाट डज इट मीन ऑफ द MOPU? ओके, M मीन्स मोबिल, नो प्रॉब्लम. O मीन्स ऑफशोर, नो प्रॉब्लम. PU मीन्स प्रोडक्शन, U मीन्स यूनिट. तो इसी आंसर हो गया इसका. ठीक है, P मीन्स पाइप और प्रोसेस, तो मैंने कभी बताया ही नहीं आपको. ठीक है, तो यहीं से इसका आंसर निकल गया. तो ऑप्शन C will be your right answer. Okay, option C will be right answer, no problem. So now we will see the next question. आपके I hope आपने नोट डाउन कर लिया होगा. Okay, no problem. Next question you will see. The question is that which one of the following statement is incorrect? Incorrect. Okay, no problem. So there is a two terms you have seen कि conductor और riser. Okay, conductor और riser. Conductor you know very well. Conductor you know very well. Conductor pipe. Okay, conductor casing. Okay, जो हम लोग सबसे पहली casing यूज करते हैं. Whatever the first casing you are using, that is your conductor casing.
okay, and the riser is what? Riser, suppose this is your sea water, okay, this is your sea bed, and your floating vessels is there. Suppose this is your floating vessels, no problem, okay, I am making your floating vessels, this is your floating vessels, no problem, and whatever this is your wellhead, okay, now you can see the wellhead, and whatever the fluid is going from this seabed to vessels, and whatever, suppose you are injecting something from this particular vessels to seabed, so that will be going through a simple pipe, that is called a riser, okay. Riser means that is used for rise something from bottom of the seabed to your vessels, ओके, नो प्रॉब्लम। चाहे वो फ्लूइड हो और हम कुछ चीज भेजना भी चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो सेंड थ्रू द राइजर, ओके, बिकॉज अगर हम नॉर्मली इसको भेज देंगे ऐसे ही तो वो तो सारा पानी में मिक्स हो जाएगा ना भाई। सो वी हैव टू टेक ए पाइप, सिंपली दैट पाइप विल कनेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड वट एवर वी आर सेंडिंग दैट विल मूविंग थ्रू into this particular pipe, and that will enter into the wellbore, no problem. So now the thing is that, sir, he is telling me कि which one of the following statement is incorrect, okay, please mention, this is your incorrect, he is asking, okay, no problem. So you just tell me, this is your pipe, okay, this is your pipe, this is your conductor pipe, and this is your riser. Two things are different, okay. Now you will see the graph also, you will see the picture also, okay. Picture in that, suppose this is your casing, you can say casing, or you can say your conductor casing, means first casing your conductor, then surface, intermediate, production, इस तरह की चीजें होती हैं, no problem. Now if I'm talking about the riser भी आपको मैं दिखा चुका हूँ और एक बार और पिक्चर से दिखा देता हूँ कि suppose this is your like well head, okay, and whatever the fluid you are getting at the seabed, and how you are uplifting that fluid from seabed to vessels. So we will use a simple normal pipe, that is called a riser, no problem, sir, no problem, okay. Now read the lines. Conductor is the outer casing of the wellbore. Yes, I think ये correct है. Conductor is the outer casing of the wellbore. Suppose this is your seabed, this is your conductor casing, then another casing, then another casing. So conductor casing is the outer casing of the well. No problem. This is the right. But we are searching for incorrect statement. Okay. So this is the right statement, but not the right answer of this particular question. तो मैं ये बोल दूंगा कि ये मेरा आंसर नहीं है. हालांकि ये स्टेटमेंट सही है. हालांकि this statement is right, but not the right answer of this particular question, okay, because we are searching for incorrect statement, okay. Next point is that riser is used for transporting fluid. Yes, riser is used for transporting fluid from bottom of the wellbore to the vessels, no problem. So this is also right statement, but this is not the right answer of this particular question. So this is not I am searching for, okay, I am searching for incorrect statement, okay. Now conductor and riser have the same function. No, my dear, conductor is the different function of this particular well, and riser is the different function of this particular well. So I think this is the right answer, no problem. So I will select this as of now कि sir according to me अभी तक का जो है वो मुझे ये सही लग रहा है, but let's see what happen in the next. The option we are seeing, okay, conductor is used for shielding the well flow line from external forces. Yes, external forces से we will save our vessels और our wellbore, okay. ये कंडक्टर जो पाइप है वो हमको बचा देता है. तो आई थिंक ये भी एक सही आंसर मुझे लग रहा है, ठीक है. लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि सर सी ऑप्शन जो है वो ज्यादातर मुझे गलत की तरफ मूव कर रहा है या मुझे गलत लग रहा है. हालांकि ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर मेरा हो जाएगा. सो माई आंसर विल बी सी, विल बी योर करेक्ट आंसर, because this is your incorrect statement, okay, okay my dear. चलिए, and rest of the option is correct, मुझे जो लग रहा है अभी तक देख के, ठीक है. चलिए, तो this is your right answer, okay, C option will be right, okay. चलिए, now the question next you will see, sir, which one of the following offshore installation, okay, which one of the following offshore installation using dynamic positioning system DPS for station keeping, okay. Generally for station keeping I will use two kind of like equipment, or you can say the technology I will use. First I can take the mooring, and the second I will take the DPS, so that is called the dynamic positioning system, okay. Generally हम दो ही चीजें ऐसी यूज करते हैं अपनी वेसल्स में, अपनी रिग्स में, जो मेरे
वेसल्स को हमेशा एक जगह पे लेके एक जगह पे स्टेबल रख के रखती है, ठीक है। तो जनरली वी आर यूजिंग टू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेथड एंड दैट माय वेसल्स कीप इन वन लोकेशन, ओके। सो दैट इज द वन मेथड और वन टेक्नोलॉजी इज दैट योर mooring and the second technology is that your DPS and that is called your dynamic positioning system, okay। तो यहाँ पे मुझे दो ही चीजें हैं जो मुझे मेरी वेसल्स को एक जगह पे रख के रखती हैं, रोक के रखती हैं, स्टेबल करके रखती हैं, और इसलिए मैं उसको स्टेशन कीपिंग भी बोलता हूँ बिकॉज वो मेरे स्टेशन को एक जगह पे कीप करके रखती है, नो प्रॉब्लम सर। बट जनरली अब मुझे ये बताइए कि जो रिग्स जो रिग्स मेरी बॉटम सपोर्टेड है, ठीक है, लिसन मी केयरफुली, जो रिग्स मेरी बॉटम सपोर्टेड है, जैसे दिस इज योर like suppose this is your a platform and this is your bottom supported, okay। bottom supported means the legs of this particular vessels or rigs, मैं vessels इसलिए बोल देता हूँ कि वो that can be rigs और that can be production platform, okay। तो इसलिए मैं vessels बोल देता हूँ because vessels can be your drilling rig, vessels can be your production platform, तो इसलिए मैं vessels बोल देता हूँ जनरली कि वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो सपोज ये vessels है, okay, and the bottom supported vessels है, okay, and the legs of this particular vessels is bottom supported means ये bottom पे connected है। तो is there need to use any kind of mooring system? भाई ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, wave and current and wind जब लगेगा तो this will not moving here and there because this is connected to the bottom, okay। so यहाँ पे in this situation I will not use any kind of mooring and I will not use any kind of DPS system। so in this case I will not use mooring and DPS system। तो इसका मतलब ये है कि bottom supported में the mean is that the bottom supported rigs or bottom supported platform and bottom supported vessels you can say we will not use any kind of mooring and DPS, okay। यस क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। मुझे जो वेसल्स मेरी मूव करती है फ्लोटिंग मोड में है, लाइक सपोज दिस इज योर सी बेड, दिस इज योर सी बेड, दिस इज योर वाटर सरफेस एंड दिस इज योर वेसल्स लाइक ड्रिल शिप, ओके। ड्रिल शिप योर ड्रिलिंग वेसल्स और ड्रिलिंग रिग दैट इज द शेप ऑफ शिप, ओके, एंड नाउ यू आर डूइंग ड्रिलिंग। सो इन दिस सिचुएशन आई कैन यूज DPS सिस्टम और mooring, otherwise this will be moving here and there because of wind, current and wave forces, okay। but in this situation I will not use, okay, because that will not moving here and there, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये हमेशा फिक्स है, ठीक है। तो in this, तो now you will tell me कि he is telling us कि which one of the following offshore installation using DPS system। अब my dear jacket rig is your bottom supported, okay, fixed platform, candy fixed platform or complaint tower, these are the jacket type of rigs, okay, jacket type of platform, okay। so in this situation or in this vessels we will not use any kind of mooring, any kind of DPS system because these are your jacket type of platform is your fixed platform, okay। so यहाँ पे तो मैं कोई यूज करने वाला नहीं हूँ, तो इसका मतलब I will not use here DPS system because यहाँ पे तो मैं mooring भी नहीं यूज करता हूं क्योंकि वो फिक्स है। चलिए, नो प्रॉब्लम। जैकअप रिग सर, जैकअप ऑल्सो फिक्स माय डियर, जैकअप भी तो फिक्स है, तो इसमें इसका मतलब DPS और mooring में यहाँ पे भी यूज नहीं करने वाला हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और जनरली सर आप DPS यूज करते कहाँ हो मुझे ये बताइए सर। जनरली वेयर यू विल यूज द DPS सिस्टम दैट यू जस्ट टेल मी। वॉट एवर द शिप शेप, ऑल द शिप शेप वेसल्स वॉट एवर यू आर हैविंग देयर यू विल यूज a DPS सिस्टम like this, okay, like this। तो जितने भी शिप शेप के वेसल्स हैं, लाइक ड्रिल शिप है, लाइक आपका सेमी सबमर्सिबल है, लाइक आपका वो क्या बोलते हैं उसको FPSO है, तो जितने भी शिप शेप के जैसे देखने को मुझे मिलते हैं उनमें मैं जनरली DPS यूज करता हूं। वॉट एवर यू विल सी द शिप शेप वेसल्स जनरली वी विल यूज द DPS सिस्टम, डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम, ओके। एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे मेंटेन करता है चीजों को, आई विल ऑल्सो टेल यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चन इन GATE 2021 दैट ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ इट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेमी सबमर्सिबल रिग, semi-submersible rig sir, you know that is your semi-submersible rig means you can see this is your deck area, this is your column and this is your pontoon and this is your what sea water and there will be ship equipment all the equipment for drilling or production unit and that is your you can drill. So these are your pontoon and these are the columns and these are the deck. So we will use your DPS kind of system because this is also floating mode.
mode, and this also can moving here and there because wind and wave and current forces. So it means in semi-submersible, can I use DPS system? Yes, my dear, I will use DPS system in this kind of situation. Okay, no problem. Sir, what about the TLP? In TLP you can see, this is your TLP, and you will see what? This is your tendons. Tendons means steel platform, or okay, steel platform, or group of tendons is called teether. ये मैंने आपको बताया था, group of tendons is called teether. No problem. So now you will see these steel pipes like will be also, this is also floating platform. I will not tell you this is a bottom support, this is also floating platform. But what happened? The buoyancy forces, I will tell you, buoyancy forces is greater than the weight whatever acting downwards of this particular vessels. तो buoyancy forces इतना ज्यादा हो जाता है कि हमेशा ऊपर को उठने की तैयारी करता है, और all the steel pipe will be in tension. ओके, और जिसको मैं हल्का सा मूरिंग भी बोल देता हूं. ठीक है, चलिए. नाउ यू विल सी, बट इन दिस सिचुएशन दिस वेसल्स नॉट मूविंग हियर एंड देयर, सो आई विल नॉट यूज हियर व्हाट डीपीएस सिस्टम. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, सो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट आंसर. ओके, दिस सेमी सबमर्सिबल विल बी द राइट आंसर वेयर आई विल यूज डीपीएस सिस्टम जनरली. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सी, दिस इज वेरी थ्योरेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन, और मुझे इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पसंद नहीं है. क्यों नहीं है बता देता हूं, क्योंकि यहां पे मुझे रटने वाली चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है. देखिए, रटने वाली चीजें दो तरीके की होती हैं. एक तो वो कि बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैं समझ जा रहा हूं चीजों को, और ठीक है, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सा भी लग रहा है और रट भी रहा हूं मैं. ठीक है, यहां पे चीजें रट ही रहा हूं, मतलब मुझे क्या ना, ये इसमें क्या ना, इसमें एक चीजें और होती हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में चीजें आंसर दूसरे भी बन सकते हैं, मतलब ये बहुत हार्ड एंड फास्ट सा नहीं होता. ठीक है, तो यहां पे फिर भी देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेफ्टी सिस्टम फॉर द ऑफशोर इंस्टॉलेशन. ठीक है, ऑफशोर इंस्टॉलेशन जब मैं करूंगा तो मेरे लिए जो प्राइमरी सेफ्टी होगी और मेरे लिए कुछ सेकेंडरी सेफ्टी होगी. ओके, सो आई विल हैव सम प्राइमरी काइंड ऑफ सेफ्टी एंड आई विल हैव सम सेकेंडरी काइंड ऑफ सेफ्टी. ओके, सो आई हैव टू सेलेक्ट विच इज नॉट द प्राइमरी सेफ्टी, मीन्स आई हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट द प्राइमरी. आई विल सेलेक्ट राइट ऑप्शन विच इज द सेकेंडरी. ओके, सो जस्ट टेल मी, अगर कहीं पे आग लगने वाली है, ठीक है, और एक जगह आग लग गई है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि मुझे आग ना लगने के मेथड पहले देखने हैं या आग लगने के बाद जो सेफ्टी हो चाहिए वो मैं पहले डिसाइड करूंगा. ठीक है, अरे भाई पहले डिसाइड कर लूंगा कि मुझे आग ही नहीं लगने देनी है, आग लगने के बाद जो मुझे सेफ्टी चाहिए वो मैं बाद में देखूंगा. ठीक है, तो मैं, अगर तुम पहले ही आग लगने के बाद सेफ्टी देख रहे हो, इसका मतलब आप श्योर हो कि आग लगेगी. समझ रहे हो ना भाई? तो इसलिए आई विल ट्राई कि मुझे आग लगने से बचाना है. बात समझ रहे हो? तो यहां पे आप सिस्टम देखिए, इसने कहा विच इज नॉट द प्राइमरी सेफ्टी. ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख रहे हो कि इमरजेंसी शटडाउन. ठीक है, अगर इफ दे एनी वर्स्ट कंडीशन यू आर हैविंग विद द ऑफशोर रिग्स, सो इट मींस यू विल सी कि देयर इज ए इमरजेंसी शटडाउन. इट मींस देयर विल बी इमरजेंसी शटडाउन. सो इट मींस एकदम से शटडाउन हो जाए जिससे कि फायर वगैरह की चीजें ना बन पाए. ठीक है, सो दैट मींस फायर इमरजेंसी शटडाउन विल बी योर प्राइमरी सेफ्टी. ओके, प्राइमरी सेफ्टी, क्योंकि इसके बाद जो, अगर मैं इमरजेंसी शटडाउन नहीं करता, इसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हूं, उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है वो मेरे लिए बहुत बुरी है. वो मेरी, उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उससे जो मुझे सेफ्टी चाहिए वो मेरी सेकेंडरी सेफ्टी होगी. प्राइमरी सेफ्टी तो वही कि वो काम ही ना हो. समझ रहे हो ना? वो काम ही ना हो जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं, तो दैट इज योर प्राइमरी सेफ्टी. और अगर वो काम हो गया उसके बाद जो मैं सेफ्टी रखूंगा वो मेरी सेकेंडरी सेफ्टी है. इस तरीके से इसको देख सकते हैं. तो मुझे वो काम होने ही नहीं देना है, तो इमरजेंसी शटडाउन एकदम चीजें बंद हो जाए जिससे कि मेरी वो बेकार कंडीशन ना आए, तो दैट विल बी योर इमरजेंसी शटडाउन. ओके, नो प्रॉब्लम. आइसोलेशन. ओके, मैं चीजों को आइसोलेट कर दूं. सबसे पहले मेरे लिए अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो एम्प्लॉय हैं, जो वेसल्स पे काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनको आइसोलेट करना, उनको बचाना, दैट विल बी ऑल्सो माई प्राइमरी कंसर्न और प्राइमरी सेफ्टी. सो दिस इज ऑल्सो ए प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो ए प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो ए प्राइमरी. नेक्स्ट, ब्लो, यू कैन सी द ब्लो डाउन ऑल्सो. ब्लो डाउन में क्या होता है
कि whatever the fluid or whatever the chemical, whatever the hydrocarbon, whatever the feed you are injecting in any particular units, okay, units can be your boiler, units can be your treating unit, hydrocarbon treating unit, कुछ भी units अगर मैं उस unit में जो fluid या जो भी hydrocarbon feed कर रहा हूं, उस feed करने की process को रोकना होगा. That feeding process I have to stop. That will called your blow down. So it means जैसे ही मैंने emergency shutdown किया तो वो ये भी तो मैं कर दूंगा, ये भी तो एक emergency shutdown की तरीके का ही काम है, तो इसको भी मैं primary concern में रख दूंगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे emergency shutdown में I'm stopping everything, okay, which is running on the offshore vessels, so that कि further problem create ना हो. Okay, and blow down also same kind of things, whatever we are sending feed to any units, so that I also have to stop. So ये भी blow down में primary concern ही है. तो फायर प्रोटेक्शन में क्या है कि अगर फायर लग गई है या फायर मेरी आ गई है अपनी वेसल्स पे, सो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अपनी प्रोटेक्शन देखूंगा. तो भाई पहले मेरी कंसर्न था आग ना लगने देना, और अगर लग गई तो फिर मेरा सेकेंडरी कंसर्न बनेगा. तो इट मींस दिस इज नॉट द प्राइमरी, दिस इज योर, यू कैन से द सेकेंडरी कंसर्न. ओके, सो आई थिंक ये इस तरीके के आंसर देना और सेलेक्ट करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मुझे अच्छे ज्यादा नहीं लगते. तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट. ओके, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, you will see. Okay, now this is your next question. This is also your the question which is related to your DPS, my dear, and I'm telling you one more thing कि this is your MCQ question. Okay, MCQ question means multiple choice question, means there will be only the one question that is right or that should be right. Okay, so okay, no problem sir. Now we will see the question, फिर मैं आपको चीजें और कुछ बताने वाला हूँ. Okay, the primary function of the thruster in the dynamic positioning system of an offshore installation is, suppose you are having vessels and in the vessels you are having like a drill ship or semi-submersible, and where we are having DPS system. यहाँ पे हम DPS system रखते हैं अपने पास में. ठीक है, चलिए, तो DPS system if you are having, and he is telling me कि what is your primary function of thruster. Okay, thruster, because the DPS system कैसे काम करता है, इसमें थ्रस्टर एंड प्रोपेलर होते हैं जो मेरे, आई एम टेलिंग यू पहले बेसिक से आपको चीजें बता देता हूं. सपोज दिस इज योर बोट, दिस इज योर सी वाटर, ओके, एंड दिस इज योर सी बेड, दिस इज योर सी बेड, एंड यहाँ पे आपका वेसल्स है, यहाँ पे आपका वेसल्स है माय डियर, दिस इज योर वेसल्स, ओके, नो प्रॉब्लम, एंड दिस इज योर वेसल्स, नो प्रॉब्लम. ओके, ये तैर रहा है और यहाँ पे थ्रस्टर एंड प्रोपेलर है, तो यू कैन टेक थ्रस्टर एंड प्रोपेलर. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ व्हाट हैपन, सपोज द विंड एंड फोर्सेस विल बी एक्टिंग दिस साइड. ओके, विंड एंड फोर्सेस इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. सो नाउ यू आर डूइंग सपोज ड्रिलिंग or production, whatever the operation you are doing. So suppose your wind and vessels and wave and current is coming from this direction. So this vessels is try to move this one. This vessels try to move that another side, means in this side. Okay. Now this vessels try to move this side, but you are doing operation, my dear. So your vessel should be in the fixed location. नहीं तो ये process जो है ये खराब हो जाएगा, vessels टूट जाएंगे, pressure टूट जाएगा, ये चीजें ब्रेक हो जाएंगी. So मैं ये नहीं चाहता हूं, तो मुझे इन फोर्सेस के अंगेंस्ट उतना ही फोर्स दे देना होगा. सपोज इसने इन विंड फोर्सेस और करंट फोर्सेस ने मुझे 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में दिया, तो उतना ही फोर्स में इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दूंगा, जिससे मेरे ये फोर्सेस न्यूट्रल हो जाएंगे और मेरे वेसल्स विल नॉट मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन और दिस रेफरेंस लोकेशन. ओके, तो ये चीजें मैं कर देता हूं, तो ये चीजें मैं सेट कर देता हूं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, व्हील वगैरह से मैं ये चीजें सेट कर देता हूं कि ये मेरी वेसल्स का प्रॉपर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, और इस वेसल्स का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदलने का अगर कोशिश कोई करेगा तो मैं उसको उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में देके अपना लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड नहीं बदलने दूंगा. तो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द डीपीएस. ओके, तो यही चीजें यहां पे होती हैं. सो अकॉर्डिंग
accordingly we will see the right option, my dear. From you are having 4 option. Okay, to apply the thrust in the direction of opposite to the resultant environment forces. Okay, so it means the DPS will apply the thrust or forces to the direction of opposite direction to the resultant environment forces. Okay, resultant means suppose वेव भी कुछ दे रहा है. ओके, वेव 4 दे रहा है, विंड 1 दे रहा है, टोटल मिला के 5 रिजल्टेंट फोर्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ओके, सो मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे देना होगा एक फोर्सेस. तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट आंसर. ओके, चलिए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं. टू अप्लाई थ्रस्ट इन द सेम डायरेक्शन एज ए रिजल्टेंट एनवायरमेंट फोर्स. नो माय डियर, इफ द विंड इज मूविंग दिस साइड एंड थ्रस्टर प्रोपेलर आल्सो गिविंग द फोर्सेस दिस सेम डायरेक्शन, तो योर वेसल्स विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन. ओके, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. ऐसे थोड़ी ना होता है. मुझे बनाया ही इसलिए गया है, डीपीएस को बनाया ही इसलिए गया है कि उसकी पोजीशन फिक्स रहे, और ये और इस फिक्स पोजीशन को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है या इस फिक्स पोजीशन से हटने की कोशिश कर रहा है. सो दिस इज नॉट right answer. Okay, now the next C option you will see that to apply the thrust in the direction of opposite motion. मतलब सर, हाँ, कि मतलब मुझे एक अप्लाई थ्रस्ट देना है, फोर्स देना है in the direction of opposite to the motion. Okay, suppose these wind, current and wave give the motion to this particular vessel in this direction, so I will give the opposite forces same again the against the motion whatever you are having because of this environmental forces. Okay, तो apply thrust in the direction of opposite to the motion. ठीक है, जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके अपोजिट मुझे फोर्स दे देना है जिससे मेरी वेसल्स वापस आ जाए. तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है. ठीक है, नाउ टू अप्लाई थ्रस्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन. ओके, इसका मतलब ये भी नहीं है. तो सेम डायरेक्शन वाली तो बात होनी ही नहीं है. इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं मेरे भाई, 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं. बट ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू था, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे सही नहीं हो सकते. ओके, दिस क्वेश्चन वाज एमसीक्यू, सो देयर विल बी नो 2 ऑप्शन विल राइट. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ बच्चों ने ये वाला टिक किया और कुछ बच्चों ने ये वाला टिक किया. ठीक है, और बहुत बच्चों को अपना गेट का एग्जाम लिखते हुए डाउट हो रहा था कि यार ये 2 ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, अब कौन सा सेलेक्ट करूं, ये एमएसक्यू नहीं है, ये एमसीक्यू है. तो मेरे भाई कुछ बच्चों ने ये सेलेक्ट कर दिया, कुछ बच्चों ने ये सेलेक्ट कर दिया, और फिर बाद में जब इसका आंसर आया वो ये वाला आया था. देन द राइट आंसर वाज दिस, एंड द स्टूडेंट्स चैलेंज द क्वेश्चन, सर दिस आल्सो कैन बी राइट. देन द गेट हु कंडक्ट द गेट एग्जाम, सो उन्होंने सोचा कि यार दिस इज आल्सो राइट. सो देन द फाइनल की आल्सो आंसर की will release. So in that final answer key you will see A and C both answer are correct. ओके, सो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है. ठीक है, या तो ये एमएसक्यू में देना चाहिए था या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन उनको बदल या गलत दे देना चाहिए था. ठीक है, सो आई थिंक यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को एमएसक्यू में मैं मानता हूं और ए और सी इज द राइट आंसर. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ यू विल सी. ओके, ये कैसे काम करता है ये भी हम लोग देख लेते हैं हल्का सा. वी विल सी द लिटिल आइडिया अबाउट द हाउ इट वर्क. ओके, हाउ इट वर्क यू विल सी. व्हाट हैपन कि यू विल फिक्स द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. Okay, and like x, y और theta means like up and down motion. Okay, तो ये वाला वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं in the memory of your thruster and propeller programmer. Okay, so we will see what we will see the position. Okay, we will see the position day by day, or you can say periodically, like there will be sequence like within 1 minute, 2 minute, 5 minute. So we will see we will check the location. Okay, we will check the location and then we will compare that location, this latitude longitude with the fixed latitude longitude that we have fixed. तो अगर हमको लगा कि यार इस जो हमने फिक्स किया था उससे हमारा latitude longitude या मेरा x y की वैल्यू बदल रही है या चेंज हो रही है, तो आई विल कैलकुलेट कि कितना बदला है, कितना चेंज हुआ है. ओके, आई विल सी द चेंजेस ऑफ योर लोकेशन ऑफ योर वेसल्स इन द डायरेक्शन ऑफ x, y और अप एंड डाउन एंड थीटा. Okay, then accordingly if you will see this particular changes, so accordingly in which direction and how much forces the thruster have to apply to fix the same location. Okay, to fix the same location or to maintain the right location of the vessels. Okay, so मगर मुझे लग रहा है कि यार मेरा x की वैल्यू बदला है, मतलब वेसल्स आपका सपोज इस डायरेक्शन में गया है, इट मीन्स कितना गया है सर, वो इतना गया है. तो उसको वापस लाने के लिए हाउ मच फोर्सेस आई हैव टू गिव
गिव दैट आई हैव टू गिव द F1 फोर्सेस अगर ये 0 है या जो भी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे रेफरेंस पॉइंट से पीरियडिकली चेक करना होगा और चेक करने के बाद आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिफरेंस इन x and y and theta direction and accordingly I have to give the forces, okay, and that forces I have to calculate and these forces will give by the thruster, okay, and after thruster your vessels will return back to the original location and fixed location and allotted location and accordingly we will see the recheck, we will go फिर recheck position कि उसको सर दोबारा चेक कर लीजिए कि हम वापस सही लोकेशन पे आ गए नहीं आ गए, तो वो दोबारा से चेक कर लेता है रेफरेंस से। अगर डेल्टा x 0 और डेल्टा y 0 और डेल्टा थीटा 0 सब 0 आया है, इट मींस हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ये प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग ये चलती रहती है, इट्स ए साइकिल चलती रहती है, दैट इज रिचेकिंग अगेन एंड अगेन और अकॉर्डिंगली वो फोर्सेस देता रहेगा और अकॉर्डिंगली वो रिचेक करता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डीपीएस सिस्टम काम करता चला जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आंसर राइट ऑप्शन विल बी योर A and C, okay, no problem. Now the last question is that of this particular year which has been asked in GATE 2021 from the offshore technology. Now you will see there is a 1 column and 2 column is given, okay, no problem. Okay. So group 1 I have to match the following with the group 1 and group 2 और group 1 में जो है vessels के नाम given है, in group 1 given in vessels name and like rigs name you can say, platform vessels you can say, and group 2 is given how these vessels get support, okay, no problem. So now you will see the answer, my dear. So this is telling us semi-submersible platform. If I am telling you semi-submersible platform, so you can see this kind of semi-submersible platform you are having. In this semi-submersible platform you are having the columns, my dear, okay. So because of these columns and pontoon, so that vessels will get support and these vessels will get appropriate floating mode or this vessel will be in station keeping, okay. So now you will see the semi-submersible platform will goes to column stabilized unit. Column stabilized unit, it means P goes to 4. I think this will be your right answer, okay. इससे आपका आंसर पता चल गया मुझे जो लगता है, नो प्रॉब्लम। बाकी भी देख लेते हैं, चलिए। तो स्पार प्लेटफॉर्म, माय डियर, स्पार्ट मतलब in spar there will be teether, turret mooring, catenary mooring, okay, no problem. So now I will see the picture of spar, okay. I will see the picture of this kind of the vessels. You are having a spar picture, okay. Spar picture you have, this is your spar, no problem. Sir अभी ये समझ में नहीं आ रहा है spar, so no problem. I will see you another picture of spar. You will see this is your spar, a very long column, okay, and you are having the catenary mooring, okay, catenary mooring. So it means spar goes to third, spar goes to third. So you will see what Q goes to third, no problem, okay. Next point is that tensile leg platform, okay. So tensile leg platform, this is your tensile leg platform, my dear, okay, no problem. This is your tensile leg platform. मतलब sir, मतलब these are the steel pipe always in tension. This is your tensile leg platform, and you can say this is called your tendons. This is called your tendons. And now if I'm having another picture of spar, you will see these are called your tendons. These are called your tendons. Group of teether is called tendons. Okay, these are one legs is called teether and group of teether is called tendons. So now you will see tensile leg platform is your you will have your teether, okay. Teether means these are steel pipe is called teether, please remember this word, okay, and group of teether is called tendons, no problem. चलिए, next point is that FPSO means R goes to 1, FPSO last one, FPSO you will see this is your FPSO. In FPSO you are having different you can say the mooring, and that is called your turret mooring, okay. In fact turret mooring can be 2 type, internal turret mooring, external turret mooring, okay. So you will have a different like these like एक turret mooring होता है जो कि हमारा एक vessels के एक साइड में ही सारे mooring जो है लग जाते हैं और इस mooring के along ये vessels rotate भी कर सकता है and this can bear high forces of environmental, okay. तो यहाँ पे you can see the FPSO can be the right option. You will see the second turret mooring means you will see the S goes to second. So I think always the first option will right. So you will see the right option is that. You will see the right option is that this one.
Okay, A will be the right option, no problem. So I think this is all about the question which has been asked in GATE 2021 and from the offshore technology. काफ़ी क्वेश्चन थे, आई थिंक यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, यू कैन सी, और 6 क्वेश्चन इज वेरी इनफ, ओके, जो कि ऑफशोर से आए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू वेरी मच माय डियर, हैव ए नाइस डे.